glad this to know you also. I just was struggling that we failed miserably. So he was giving us a big वहाँ एक chair रखो. And I had medicine for 2 weeks. And after that, it went very bad. I had to go to the hospital, and it was my lungs. Hello everyone. Sorry about the alarm. Namaste, Sawadika, Kuzu Zongpola. आइए सब लोग कुर्सियाँ पकड़ लीजिए. Let's all gather together and take our seats. Please feel free to bring your chai to the chairs. Thank you everyone. Anybody else for pictures? Okay. So we already started. Namaste, Sawadika, Kuzu Zongpola. Let us begin with wishing Losar Tashi Delek, or Happy Bhutanese New Year, to all of you. Today, we are also celebrating the International Mother Language Day, or the Matribhasha Divas. And thank you everyone who is present here. Thank you for joining us. I know it's a weekday, and it's not easy to schedule evenings on a weekday, but hopefully everyone will have a good time. And before we begin, I would like to request our consul, Mr. Krishna Chaitanya ji, to come on stage and say a few words. Good evening. Namaste. Good evening. Koja Jampo. Swadika. As Subhashni said, today we are celebrating firstly Bhutan's Losar, which is the most important day in Bhutan. I remember my days when I was in Bhutan, how lovely and how grand celebration it used to be. So I wish all my friends from Bhutan a very happy Losar, and I wish that Bhutan continues to progress in the coming year, and Bhutan-India friendship goes from strength to strength. I must also mention that the Bhutan's unique contribution to the world is the concept of gross national happiness. That economic development is measured not by GDP but by how happy the people are. And this concept, I think, in the post-COVID world has become more meaningful, more relevant, and the world is following it and should follow. Today is also a very historical day in the sense that February 21 was the day when in 1921 in Nankana Sahib in undivided India, so many Sikhs were killed. They attained martyrdom in their bid to free the Gurudwara, the holy shrines of the Sikhs, from the clutches of a group of rogue elements who were backed by the British colonial regime. Mahatma Gandhi went there, Bhagat Singh was present there. So today we remember them and pay our respect to those martyrs. आज हिंदुस्तान के इतिहास का और दुनिया के इतिहास का एक ख़ास दिन है। ये ननकाना साहब में
मातृभाषा दिवस है तो हिंदी में बोलना पड़ेगा मुझे। हिंदी हालांकि मेरी मातृभाषा नहीं है, मेरी मातृभाषा है, एक भाषा है बज्जिका, जो बिहार और नेपाल के कुछ हिस्सों में बोली जाती है, वो मेरी मातृभाषा है। बहरहाल तो सारे गुरुद्वारों पर कुछ रोग एलिमेंट का कब्जा था और वो बहुत उसका दुरुपयोग कर रहे थे, मिसयूज कर रहे थे, वो सारी चीज़ें कर रहे थे जो वहाँ नहीं होनी चाहिए, और उन सब को ब्रिटिश हुकूमत का समर्थन था। और वो लोग इतने मतलब उन्हें कोई शर्म नहीं थी, इतने वो बेगैरत लोग थे कि in 1919 the Jallianwala massacre had already happened, and the butcher of Jallianwala Bagh, they called him General Dyer in Golden Temple of all places and honored him in 1920. So this was the event which really sparked this movement to free the Gurudwara from the clutches of these unholy elements. From 1921 we come to 1952. Today was the day when Bangla Bhasha Andolan started, and students of Dhaka University were fired upon by the then military of Pakistan, and I think 5 of them attained martyrdom and so many were injured. So we today pay respect to those martyrs also, and that was the event which really culminated into the creation of Bangladesh about 2 decades later. Since we have friends from Bhutan and Bangladesh also here, so we must remember that Bhutan was the second country which accorded recognition to Bangladesh. So with these words, I think we have other friends who will be speaking in more details about these events. We must remember this history because now there is an attempt to whitewash all those things. Recently we had, I would not even name them to dignify him, but we had somebody, you can read in the media, who said that nothing actually happened, and actually the Pakistan military and the Pakistan military personnel should be lauded for the bravery and for the heroic deed they did. And we know that it is on record and it is well documented that 3 million Bangladeshis were killed and half a million women were dishonored. So how can we forget this? We must remember this, and we should not really allow anybody to whitewash this. Thank you. Let us look forward to a very good evening, memorable evening. Thank you, sir. So let us begin. Are you all ready? Few months before or after, and maybe a little bit in Hindi. तो लोसर जो है सिर्फ भूटानीज फेस्टिवल नहीं है, हिंदुस्तान, नेपाल, तिब्बत और जैसा सर ने पॉइंट आउट किया नॉर्थ ईस्ट, हिंदुस्तान में नॉर्थ ईस्ट में भी सेलिब्रेट किया जाता है। जो इसको मनाने का तरीका है वो काफ़ी हद तक इस चीज़ पे निर्भर है कि कहाँ पे मनाया जा रहा है, कौन सा कैलेंडर फॉलो किया जा रहा है, और कौन वहाँ की जो लोकल ट्रेडिशंस है, लोकल सभ्यता जो है वो क्या है। एंड मेरे ख्याल से हम सब लोग ये बात तो मानेंगे कि आज यहाँ इंडियन कॉन्सुलेट से बेहतर कोई जगह नहीं है इसको सेलिब्रेट करने की। हम सब लोग यहाँ पर हैं, हिंदुस्तानी, बांग्लादेशी, भूटानी एंड हमारे थाई दोस्त, सब के सब यहाँ हैं। सो लेट अस वेलकम आवर भूटानीज फ्रेंड्स टू द स्टेज, एंड आई वुड लाइक टू वेलकम मिस Karma Dupto first. Please give a round of applause to her. She will share some information about Loser and more with us. Namaste. So, Dikha and Sampu to all my friends. Okay, I'll repeat. Namaste, Sawadika, and Kusampu to all my friends.
Good evening, ladies and gentlemen. First of all, I would like to thank Krishna sir for inviting us here tonight. And there is no other great pride than representing our country, tradition, which is celebrated. In some case, I think you must be thinking that who am I and what I'm wearing. And I'm Karma Dukto, and this is Kira, my national dress. Today is our Losar, which is the new year, and I'm here to tell you about how we celebrate the new year in our country. How we celebrate New Year in Bhutan. Being one of the most significant celebrations, the country observes a national holiday with government offices and schools closed. In 2023, it will be celebrated on 21st February, and which is also our 5th king's birthday. The celebration can last up to 2 weeks. However, the first 3 days of New Year are the most important. The first day of New Year marks the end of the year when people wish for peace and success for themselves, their families, and their animals. The day begins with bath and offering milk, butter, rice, and other items to each house's altar. They purify their homes by burning juniper incense and lighting butter lamps to ward off evil spirits. People in communities also place colorful prayer flags on the top of their home to pray for a successful year free of deaths and illness in the home and villages. On this day, temples and monasteries are lavishly decorated, and special ritual known as Rimdo are also performed at monastery. The Torma ceremony, in which prayers are made to align everyone's energy for coming year, is also highlighted. Bhutanese people, like most other Asian countries, cheerfully greet each other with warm wishes during these brief days and flooded with thousands of greetings and messages on Losar Eve and day. People say Tashidale and to each other during this special event because it is local greeting and a wish for a lucky and successful new year. New Year in Bhutan is also a good time to try a variety of national dishes such as red rice, stew, and emadasi, as well as sweet menu that includes fried biscuit, diced sugarcane, and fruits. Sugarcane and green bananas, according to local belief, must be presented on this occasion because they bring good fortune for the coming year. In Bhutan, the day is also known as Traditional Day of Offering, as some people claim that residents of Bhutan made their annual offering of grains to Jabdung Ngawang Namgyal in Punakha on this day. The Trongsa Penlop is said to have led the representative of 8 Eastern region in the offering, as Paro Penlop coordinated the people of Western Bhutan and Daga Penlop oversaw the people of South. In this regard, some people place a great significance on this new year as a marker of Bhutan's independence and unity. The biggest celebration occurs when families and friends visit each other's home and local monastery to be celebrated and share meals. Long in the nights, there is dancing and singing. People exchange gifts, dress up in new clothes for Losar, and enjoy simple pleasure such as family gathering and watching movies at home. They spend their time celebrating and enjoying in life. On this day, family enjoy outdoor activities together, such as going on picnic, dart and archery. National sports of Bhutan are also played during Losar New Year. The locals drink huge amount of alcohol and drown themselves in their traditional hard liquor called ara. And
In that day, everyone drops their fieldwork, important tasks to celebrate the day wholeheartedly. Many people in our country of Bhutan also use it as an opportunity to make New Year's resolution in order to stay motivated in this coming year. After a very difficult phase of global pandemic, Bhutan, like the rest of the globe, is looking forward to 2023 with confidence and excitement. Bhutanese people are optimistic that 2023 will be very different from 2022. People wish for significantly less suffering and loss, as well as greater joy and happiness. We wish you all a peaceful and successful new year. Thank you and Tashidele. Thank you, and that was a good piece of information. Thank you, Karma, for that. And next up, let's welcome my lovely colleague, Rinchen Dema, who is also from Bhutan, but here she works as a kindergarten teacher. Let's give her a round of applause, and she will talk to us about the language. Good evening, everyone, and thank you so much, Krishna sir, for inviting us to celebrate our New Year's. First of all, I'd like to start with a few words of prayers that my uncle, who's a monk at a monastery in Bhutan, composed for this very event. It goes, Namlo Sargus Hebi Shezongi, Nekurcharo Pamapichanam, Nedin Geksok Barche Rabjime, Samden Chejin Dubi Melamju. So, in short, it means Happy New Year, and he's wishing all of us, our friends from India and Bangladesh, a very, very good year ahead. With this, I'll be talking. Thank you so much. With this, I'll be talking a little about my national language, our national language, which is called Dzongkha. So it's spoken by about 0.8 million people, and it was actually declared the national language in 1971, before which Hindi was quite predominant because it was used as the language in classrooms and in schools. After that, the government took the initiative to declare Dzongkha as the national language to promote national identity and to preserve culture and tradition. So today there are about 19 dialects spoken in this very small Himalayan kingdom. The name translates to the language of the district, Dzongkha. Dzong meaning district and Kha meaning language. And Dzongkha has many similarities with the Sikkimese and other Tibetan dialects and is written using the Tibetan alphabet. So here are some useful phrases that I would like you to learn, because if you ever decide to come to Bhutan, and you're most welcome to do so, then you can use it. So the first one is hello. So in Dzongkha, you say Kuzo Zambo. Kuzo Zambo. Kuzo Zambo. There you go. And the next one is thank you. Gadin Che. Gadin Che. Absolutely wonderful. Next is after you say thank you, then you would have to say you're welcome. So this is how you say you're welcome in Dzongkha. Jumba Lekso. Jumba Lekso. Jumba Lekso. That's absolutely amazing. And next we have how are you? So you say Gadebe Shui. Gadebe Shui. Gadebe Shui. Fantastic.
Next is, let's say if someone is asking you a question like, are you from India or are you from Bangladesh? And you would like to say yes. So in Dzongkha you'd say E. 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 Or if you want to say no, then men. Men. That's right. And then we have, how much is it? If you decide to buy something at a local store, then I think it's better we use Dzongkha because they would not be speaking English. So that time you can say Gadim Chimo. Gadim Chimo. Gadim Chimo. Yay! After that, I have got sorry. In case, sometimes we unintentionally hurt people. So if you want to say sorry, you can say Tip maza. Tip maza. Tip maza. There you go. So actually, like Dzongkha is quite simple, just like English, but simpler, I think, because we don't use tones and stresses, so it's just like plain and flat. In fact, like if I was talking to one of my friends in Dzongkha, you'd think that it's a boring language, but it's our national language, so we have a lot of pride in it. But anyways, thank you for being a wonderful audience, and we really appreciate this gathering tonight. Gadim Oh, thank you. Gazumchi. Gazumchi. Thank you, and thank you for everyone for participating. Actually, I agree with what Rin said, and so I'm going to just read this out. Languages are the most powerful instruments of preserving and developing our tangible and intangible heritage. All moves to promote the dissemination of mother tongues will serve not only to encourage linguistic diversity and multilingual education, but also to develop fuller awareness of linguistic and cultural traditions throughout the world and to inspire solidarity based on understanding, tolerance, and dialogue. These are not my words, these are off the site of UNESCO, but they ring true. It is important to preserve the local languages. It is important to preserve what we call our mother tongue. And now we have a special presentation by Rinchen and Sneha. Sneha is also my colleague, a kindergarten teacher, and Karma as well. Okay, all three of them on stage, please. Those who know the songs, please try to sing along if you want. So we actually came up with this song, which is like a old Hindi songs medley, because our parents are great fans of traditional and old Hindi songs like those of 80s and 90s. But we're not actually very good at it because we just came up with it yesterday and we only practiced last night. Yeah. So if you make any mistakes, we are very sorry. अच्छा मैं थोड़ा हिंदी में बता दूँ
ये हमने पिछले साल भी हमने प्रैक्टिस किया था सर के लिए। ये सब सॉन्ग्स जो है 80s आई थिंक कुछ 70s के भी है, तो ये स्पेशली आपको डेडिकेट किया हुआ है तो ज़्यादातर आप सब जानते ही हो ये सॉन्ग, तो अगर कंटिन्यू हमारे साथ गाना गा सकते हो। 2-2 लाइन ही है सब, है ना। 14 सॉन्ग है लेकिन 2-2 लाइन है। धीरे धीरे हम जाएंगे, है ना। प्रोफेशनल नहीं है लेकिन ट्राई कर रहे हैं। ओके, वी कैन स्टार्ट नाउ।
घर आजा परदेसी कि तेरी मेरी एक जिंदगी ओ घर आजा परदेसी कि तेरी मेरी एक जिंदगी पल पल दिल के पास तुम रहती हो जीवन मीठी प्यास ये कहती हो पल पल दिल के पास तुम रहती हो पल पल दिल के पास तुम रहती हो Hey, I can see the love right in your eyes, baby. Hey, hey, love. I can feel the warmth of your hands in mine. You can be the anchor of this heart of mine. You can be the anchor of this heart of mine, my mind. You can be the anchor of this heart of mine. You can be the anchor of this heart of mine. 뭉쳐좀 지게 봉하루가 watching. Someone like you could love someone like me. 뭉쳐좀 지게 봉하루가 watching. Someone could love someone like me. Go down below the seta kiranalu koi ngai gowi bum se musum de koi kimchi daudru chelu budi de ni semdi pink nalu jodi tai chegi palisu lokchi tal sini bindu chigawi gazum sare thum de ni sem khalu gawa chowa sora la shawani du kimchi daudru chelu budi de ni semdi kimchi daudru chelu budi de ni semdi. Okay. This song for Bangla people. Yeah. So we are trying some. Mostly is a Hindi. Just one line is the Bangla. We tried Bangla song, but I think pronunciation was not good. But we tried. So after that, maybe we can play and dance on there. Okay. कागज पे दो पंख लेके उड़ा चला जाए रे जहाँ नहीं जाना था ये वहीं चला जाए रे उमर के ये ताना बाना समझ न पाए रे जुबान पे जो मोह माया नमक लगाए रे कि देखा न बाने न जाने न लाए रे दिशा हरा के मुन बोका मन तारे कागज से दो पंख लेके उड़ा चला जाए रे जहाँ नहीं जाना था ये वहीं चला जाए रे उमर के ये ताना बाना समझ न पाए रे जुबान पे जो मोह माया नमक लगाए रे कि देखना माने न जाने न जाए रे दिशा हरा के मन बोका मन तारे के मन बोका मन तारे के मन बोका मन तारे. Thank you so much for listening to us. The last song I think I request to Swan. Maybe he can sing so good. Actually, I'm waiting to. As well, approved the idea of celebrating the International Mother Language Day.
The declaration was also a tribute to the language movement in Bangladesh when it was still East Pakistan. Urdu was agreed upon as the official language of West and East Pakistan, but people from East Pakistan were majorly Bangla speakers, and they decided to demand the inclusion of Bangla language as one of the official languages in addition to Urdu. The demand was raised first by Dhirendranath Datta from East Pakistan in 1948. The students of the University of Dhaka in 1952 took over the support, and they had massive rallies and meetings. On the unfortunate day of 21st February 1952, they were open fired upon, and we lost people. I'm just going to name them, just think of them. Abdul Salam, Abul Barkat, Rafiq Uddin Ahmed, Abdul Jabbar, and Shafiur Rahman. Thousands of others were injured. This was a rare incident in history where people sacrificed their lives for their mother tongue. मातृभाषा के लिए हिस्ट्री में बहुत एक ख़ास ओकेजन था, एक ख़ास दिन था जब इतने लोगों ने अपनी जान पे खेल गए। और इस दिन को 1999 में यूनेस्को ने इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे एक्सेप्ट किया और पूरी दुनिया की जो मातृभाषाएं हैं उनको प्रमोट करना शुरू किया। The 24th edition of International Mother Language Day has a theme by the name Multilingual Education, a necessity to transform education. Simple सी बात कि education, पढ़ाई लिखाई सिर्फ एक भाषा में ना होकर कई भाषाओं में हो। अगर आपकी एक राष्ट्रभाषा है, लेकिन अगर आपकी मातृभाषा है, उसमें भी आप पढ़ाई कर सकें, उसको भी जान सकें, उसको भी समझ सकें, उसकी ग्रामर, उसका कहाँ से वो आई है, उसमें किस तरीके से उसे लिखना है, किस तरीके से बोलना है, वो भी स्कूलों में पढ़ाया जाए, इस्तेमाल किया जाए, इस चीज़ को प्रमोट किया जा रहा है। And now is the time to call our very own Bengali boy, Bibaswan Pal Chaudhary, but more famously known as Swan. He will tell us a little more about the Bangla language, and of course we are going to be hearing him sing as well. Swan, can we have you on the stage? I see him now. Test. Junada Hattalik, because of you, we are celebrating this. I will start with a folk song from Bangladesh. This is a philosophical song. It's called Shona Diya Bandha Ase Ghar. And if you know the lyrics, I have friends from Bangladesh, please join in.
অন্তরে পারলাম না বোঝাইতে রে হায় রে তুই সে আমার মন আমার মন করে পারলাম না বোঝাইতে রে হায় রে তুই সে আমার মন আশি কইলা ভবের মাঝারে ও মন রে স্বপ্ন দেখা রইলি পরে ও মন রে আশি কইলা ভবের মাঝারে ও মন রে স্বপ্ন দেখা রইলি পরে ও আমার সেই স্বপ্ন কি মিথ্যা হইতে পারে রে ও আমার সেই স্বপ্ন কি মিথ্যা হইতে পারে রে আয় রে তুই সে আমার মন করে পারলাম না বোঝাইতে রে আয় রে তুই সে আমার তুই সে আমার তুই সে আমার তুই সে আমার Thank you. Some of you probably know that I am actually half Bangladeshi. Like you can't really tell the difference. My grandparents from my father's side, they come from Bangladesh. So in 1946, when there was this riot in Noakhali, so my father's family, they migrated to this side of the Bengal, to Krishnanagar, Nadia Jila. So I was just talking to someone. Without love, there cannot be a revolution. Okay, so I'm going to be singing a love song. This is also from Bangladesh by a very famous rock star. Okay, and I'm sure you know this one. This one's called. Okay, let it be a surprise. We are all ready for not a revolution, but a lovevolution here. সুন্দরী তামামা তুমি নীলিমার দিকে তাকিয়ে বলতে পারো এ আকাশ আমার সুন্দরী তামামা তুমি নীলিমার দিকে তাকিয়ে বলতে পারো এ আকাশ আমার
বলতে পারো এ ফুল আমার ক্যামেলিয়া হাতে এই সন্ধ্যায় ভালোবেসে যত খুশি বলতে পারো এ ফুল আমার ফুল শুধু ছড়াবে সৌরভ লজ্জায় বলবে না কিছুই ফুল শুধু ছড়াবে সৌরভ লজ্জায় বলবে না কিছুই ফুল থাকবে নীরব আমি তারায় তারায় রটিয়ে দেব তুমি আমার আমি তারায় তারায় রটিয়ে দেব আমি তোমার যোছনা লুটালে তুমি অধিকার নিয়ে বলতে পারো এ যোছনা আমার যোছনা লুটালে তুমি অধিকার নিয়ে বলতে পারো এ যোছনা আমার এই চাঁদ খুঁজবে না উত্তর একবার যদি বলো এই চাঁদ খুঁজবে না উত্তর একবার যদি বলো আমাকে আমি থাকবো না নির্বাক আমি তারায় তারায় রটিয়ে দেব তুমি আমার আমি তারায় তারায় রটিয়ে দেব আমি তোমার আমি তারায় তারায় রটিয়ে দেব তুমি আমার আমি তারায় তারায় রটিয়ে দেব আমি তোমার তুমি আমার Thank you very much. I was talking to my old bandmates today who are all from Kolkata, and actually my first ever album which was released, it was in Bangla. So, and the funny thing is, there was this song which I wrote on the 20th February in 2002, or 2002, 20th of February. But by the time the song was finished, it was 21st February, so I thought maybe this would be a good opportunity to play one of my original Bangla tunes, which I don't get to play much here. So this one's called Mona Lisa. This is actually about Lovolution again. Like I said, without love, there cannot be a revolution. So since we are celebrating Antarjatik Matribhasha Divos, I would like to blend love and revolution together. This one's called Mona Lisa. এঁকেছিল স্বপ্নেরা তোমায় স্বপ্নেরই অভ্যর্থনায় আমার মনেও ছিল যত ভয় নিহত সব তোমার ছোঁয়ায় দু চোখে জেলেছ আমার শরীরই স্বপ্নের প্রত্যয় তোমার শরীর তাই আঁকবো আবার শরীর নিঃসঙ্গতায় এতদিন গেছি শুধু গান হাতড়িয়ে অজস্র অভিমান যন্ত্রণার তবু
অবসান যন্ত্রেরই হাতছানি অন্তরায় এখনই তোমাকে প্রয়োজন তুমি জ্বালবে রাতের প্রহসন তোমাতে অদৃশ্য আমার মন তুমি ছাড়া মন নিঃসহায় ও সামনেরই পথে পথে খুঁজে ফিরি সে চোখের ভাষা মিলবে না কোনো মতে আজ তারে জিজ্ঞাসার বিনিদ্র কত রাতে আমি মেখেছি বিষণ্ণতা আমার হৃদয় ক্যানভাসে তবু আসে মোনালিসা দু চোখে জেলেছ আমার শরীরই স্বপ্নের প্রতলে তোমার শরীর তাই আঁকবো আবার শরীর নিঃসঙ্গতায় এতদিন গেছি শুধু গান হাতড়িয়ে অজস্র অভিমান যন্ত্রণার তবু হয়নি অবসান যন্ত্রেরই হাতছানি অন্তরায় এখনই তোমাকে প্রয়োজন তুমি জ্বালবে রাতের প্রহসন তোমাতেই অদৃশ্য আমার মন তুমি ছাড়া মন নিঃসহায় ও সামনেরই পথে পথে খুঁজে ফিরি সে চোখের ভাষা মিলবে না কোনো মতে আজ তারে জিজ্ঞাসার বিনিদ্র কত রাতে আমি মেখেছি বিষণ্ণতা হৃদয় ক্যানভাসে তবু আসে মোনালিসা Thank you. This is to honor all the students that gave their lives on this day. Actually, this is a song as well, but I realized last night I don't have the time to prepare for the song, but I'm going to be reciting the poem. And I can't really do a word-to-word transliteration because, like Sue was saying, every language has its own essence and charm. So if you want to know like a word-to-word transliteration or like a transcreation, we can have a chat later on. But this poem was written by in 1952, and the poem was published in 1954. It's written by Abdul Ghaffar Chaudhary. This one's called Ekushe February. In English it means 21st February. আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো 21শে ফেব্রুয়ারি আমি কি ভুলতে পারি ছেলেহারা শত মায়ের অশ্রু গড়ায় ফেব্রুয়ারি আমি কি ভুলিতে পারি আমার সোনার দেশের রক্তে রাঙানো 21শে ফেব্রুয়ারি আমি কি ভুলিতে পারি জাগো নাগিনীরা জাগো কাল বৈশাখীরা শিশু হত্যার বিক্ষোভে আজ কাঁপুক বসুন্ধরা দেশের সোনার ছেলে খুন করে রোখে মানুষের দাবি দিন বদলের ক্রান্তি লগ্নে তবু তোরা পার পাবি খুন রাঙা ইতিহাসে শেষ রায় দেওয়া তারি 21শে ফেব্রুয়ারি সেদিনও এমনই নীল গগনের বসনে শীতের শেষে রাত জাগা চাঁদ চুমো খেয়েছিল হেসে
পথে পথে ফোটে রজনীগন্ধা অলকানন্দা যেন এমন সময় ঝড় এলো এক ঝড় এলো খ্যাপা বুনো সেই আধারের পশুদের মুখ চেনা তাহাদের তরে মায়ের বোনের ভাইয়ের চরম ঘৃণা ওরা গুলি ছোঁড়ে এদেশের প্রাণে দেশের দাবিকে রোখে ওদের ঘৃণ্য পদাঘাত এই সারা বাংলার বুকে ওরা এদেশের নয় দেশের ভাগ্য ওরা করে বিক্রয় ওরা মানুষের অন্ন বস্ত্র শান্তি নিয়েছে কারি 21শে ফেব্রুয়ারি 21শে ফেব্রুয়ারি তুমি আজ জাগো 21শে ফেব্রুয়ারি আজও জালিমের কারাগারে মরে বীর ছেলে বীর নারী আমার শহীদ ভাইয়ের আত্মা ডাকে জাগো মানুষের সুপ্ত শক্তি হাটে মাঠে ঘাটে বাটে দারুণ ক্রোধের আগুনে আবার জ্বালবো ফেব্রুয়ারি 21শে ফেব্রুয়ারি 21শে ফেব্রুয়ারি Thank you. Have a wonderful evening. শুভ সন্ধ্যা. Happy New Year. শুভ আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস. Let's enjoy the Bengali fish curry. 21শে ফেব্রুয়ারি 21শে ফেব্রুয়ারি. Thank you so much, Swan. That was quite an emotional poem. Are you sure? I think everyone wants the fish curry more than... No. They're still warming up the fish curry. So you can go for it. So we're talking about International Matribhasha, Antarjatik Matribhasha Dibosh. So we must do a Tagore song since we are celebrating our language. It is incomplete without Tagore, I guess. Yes, so both the nations, like the national songs are written by Kavi Guru Rabindranath Tagore, so we'll finish it off with Sir's request. I might get the lyrics mixed up, so please forgive me. This was not a part of the plan. Encore. যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে একলা চলো একলা চলো একলা চলো একলা চলো রে একলা চলো একলা চলো একলা চলো একলা চলো রে যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে যদি কেউ কথা না কয় ওরে ওরে ও ভাগা কেউ কথা না কয় যদি সবাই থাকে মুখ ফিরায়ে সবাই করে ভয় যদি সবাই থাকে মুখ ফিরায়ে সবাই করে ভয় তবে পরাণ খুলে ও তুই মুখ ফুটে তোর মনের কথা একলা বলো রে তবে পরাণ খুলে ও তুই মুখ ফুটে তোর মনের কথা একলা বলো রে যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে যদি সবাই ফিরে যায় ওরে ওরে ও ভাগা সবাই ফিরে যায় যদি কখন পথে যাওয়ার কালে কেউ ফিরে না যায় যদি কখন পথে যাওয়ার কালে কেউ ফিরে না যায় তবে পথের কাঁটা ও তুই রক্ত মাখা চরণ তলে একলা দলরে তবে পথের কাঁটা ও তুই রক্ত মাখা চরণ তলে একলা দলরে যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে যদি আলো না ধরে ওরে ওরে ও
বজরা নলে ও তুই বুকের পাঁজর জ্বালিয়ে নিয়ে একলা চলো রে তবে বজরা নলে ও তুই বুকের পাঁজর জ্বালিয়ে নিয়ে একলা চলো রে যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে একলা চলো একলা চলো একলা চলো একলা চলো রে যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে Thank you. Thank you one more time, Sue. Thank you all the performers from all my friends from Bhutan. Thank you, Sergi, for hosting this wonderful event. And thank you, Ronnie Bhai, one more time for initiating this. And I'm very glad to have found this Bengali community, Bengalis from all over the world, from New York, from Kolkata. Actually, Bengalis, they don't just live in West Bengal or Bangladesh. Bengalis are everywhere, in New York, in London. And I was telling my Bengali friends that this is very weird that I found my Bangladeshi friends in Chiang Mai. It doesn't actually remind me of Kolkata. It takes me back to London because in London I used to be all the time surrounded by these lovely people from all over Bangladesh. In fact, when I was a student and my budget, it was very restricted budget, how difficult a student life is in the UK. I got my job, first job in a Bangladeshi restaurant owned by a Sylheti person. And he said, even the days you're not going to be working, you please come and have food with us in the kitchen. That is the Bangladeshi people, that they're the most hospitable people in the world. Okay, thank you for everyone coming along and celebrating this wonderful evening. Let's have some fish curry. Oh, Sue. Okay. भाषाओं की बात हो रही है, भाषाओं को सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो हमारे बीच में जेके हैं. प्लीज़ आइए और मलयालम में आप कुछ सुनाएंगे, राइट? Thank you so much. See, I'm not a singer. I'm trying something new. Kindly excuse. So I'm going to sing a folk song from Kerala. Kerala is a state in southern part of India. This song basically sung by the tribals or underprivileged communities. Olden times, they never used to have proper food and everything. They used to wait for 2 months in a year to get a vegetable, a leafy vegetable called takara. In Malayalam, it's called takara. In English, it is called sickle senna. Sickle senna grows only once or twice, 2 months in a year. So they will be waiting for that. That used to be their common food. After 2 months, they don't have anything, they go back to poverty and anything. So I'm dedicating this song for those underprivileged communities. So my request is, you will not be understanding anything what I'm going to say or sing, but I'll be repeating one line. Kindly help me to repeat the same line. So I'll be singing like this. Tana 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 tayantaro. Tana 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 tayantaro. ഒന്നാം നാൾ ഒരു വട്ടി, രണ്ടാം നാൾ രണ്ടു വട്ടി, മൂന്നാം നാൾ 3 വട്ടി തകരന്നുള്ളി. താനാ തന തന താനാ തന തന താനാ തന തന തെയ്യന്താരോ. ഉപ്പെട് മുളകെട് വെങ്കായ കലമെട് എന്നിട്ട് നല്ലൊരു കറിയുണ്ടാക്ക്. താനാ തന തന താനാ തന തന താനാ തന തന തെയ്യന്താരോ. ഉപ്പെട് മുളകെട് വെങ്കായ കലമെട് എന്നിട്ട് നല്ലൊരു കറിയുണ്ടാക്ക്. താനാ തന തന താനാ തന തന താനാ തന തന തെയ്യന്താരോ. അപ്പൂപ്പനമ്മാവൻ അയലത്തെ കേളുമാൻ വടക്കേലെ നാണിക്കും വിരുന്നൊരുക്ക്.
ताना तन तन ताना तन तन ताना तन तन തെയ്യന്താരോ കുംഭമാസം കഴിഞ്ഞല്ലോ തകര കഴിഞ്ഞല്ലോ ഇനിയെന്തു ചെയ്യുമെൻ പെരുംകൊടലേ താനാ തന തന താനാ തന തന താനാ തന തന തെയ്യന്താരോ കറ്റ കറ്റ കയറിട്ടു കയറാലഞ്ചു കുരുക്കിട്ടു അനങ്ങാതെ കിടക്കെന്റെ പെരുംകൊടലേ താനാ തന തന താനാ തന തന താനാ തന തന തെയ്യന്താരോ താനാ തന തന താനാ തന തന താനാ തന തന തെയ്യന്താരോ ഹൈ താനാ തന തന താനാ തന തന താനാ തന തന തെയ്യന്താരോ താനാ തന തന താനാ തന തന താനാ തന തന തെയ്യന്താരോ ഹൈ താനാ തന തന താനാ തന തന താനാ തന തന തെയ്യന്താരോ താനാ തന തന താനാ തന തന താനാ തന തന തെയ്യന്താരോ. Well, Chiang Mai is filled with hidden gems, so I'm glad he came on stage. Thank you, JK. Thank you. Anybody else? Any language? 2 lines, a song, a poem? Just saying a hello. Nahi? Sure, you want to sing an English song? Yeah? नमस्ते, सत श्री अकाल, सवादी खाप, नमस्कार, केम छो? मजे माना? बहुत सारी लैंग्वेज की बात आज चल रही है, तो एक जेके की आवाज़ सुन के ही मुझे एक आइडिया नज़र आया दिमाग में, तो उसी को मैं आगे लेके चलता हूँ। मैं पहले जानना चाहता हूँ कि कौन कौन सी लैंग्वेज बोलने वाले यहाँ लोग बैठे हैं। जैसे पंजाबी बोले चरणजीत सिंह बैठे हैं, और बंगाली बैठे हुए हैं, गुजराती हैं, ठीक है 3, और गढ़वाली है, कश्मीरी हैं, ठीक है, और भूटानीस, नेपाली एंड बिहारी हमारे कौंसल साहब, पंजाबी भी हैं, और इंग्लिश हमारे मुल्तानी, ओके मुल्तानी, और कोई लैंग्वेज? बर्मीज, एसमीज, कच्छी, ओके कच्छी। अब इसी को हम लोग आगे चलते हैं। तो सबसे पहले क्यों नहीं कश्मीरी, आइए एजाज खान जी, आइए आप। एक आना पड़ेगा आपको, नहीं गाना नहीं है, बहुत पॉपुलर एक डायलॉग है हमारे बिहारी बाबू का, जो उन्होंने एक पिक्चर की थी विश्वनाथ, उसमें बोला था, और उस हिंदी डायलॉग को आपको कश्मीरी में बोलना है। मैं आपको हिंदी बोलता हूँ। जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं, उस राख से जो बारूद बने उसे विश्वनाथ कहते हैं। इसको आप कश्मीरी में बोलना है। जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं, उस आग से जो बारूद बने उसे विश्वनाथ कहते हैं। फ्लोर इज योर्स। अच्छा, जली को आग, जली को आग कहते हैं। आप लोग सब लोग अपनी अपनी भाषा में सोच लीजिए। Just one line. Ajaz Khan. जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं, उस आग राख से बारूद बने उसे विश्वनाथ कहते हैं। Dazmiz Shinar wanan, the Yus Chatsugo Motacho Sur wanan. Dazmiz Shinar wanan, Yus Chatsugo Motacho Sur wanan. Yemi Sur se Baruch wanan, Tachi Vishwanath wanan. ओके, थैंक यू। आप लोग की थोड़ी झिझक मिटाने के लिए पहले जेके
come in Malayalam. But I don't understand what you're speaking now. That's the problem. जली को राख जो I मैंने will बोला say you. Which is burned is called fire. Anything is burning is called fire. जली को आग कहते हैं. जली को आग कहते हैं. And which one is burned is Yeah. called fire. And बुझी को राख कहते हैं. बुझी को राख कहते हैं और जो राख से बारूद बने उसे विश्वनाथ कहते हैं. विश्वनाथ is the name. English, please. I'm not. You can go, Beagle. I'm sorry. I'm not very. What is burning is called fire. What is burning is called fire. When it is put down, it is called rakh, ashes. Yes. And the explosive, the ammunition which is made out of those ash is called Vishwanath. The explosive. The explosive that's made from those ashes is called Vishwanath. Arc. It's so difficult. Which one is burned is called fire. Right. Which is dropped, put off is called ashes. ഇതിനെയും നമ്മൾ അഗ്നിയായിട്ട് കാണുന്നു. അഗ്നിക്ക് ശേഷം അതിനെ ചാരമായി കാണുന്നു. ചാരത്തിൽ നിന്ന് ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കുന്ന എന്തിനേയും അതാണ് ഈ ലോകത്തിന്റെ നാഥൻ എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. Thank you, thank you, thank you. संजीव संजीव आओगे पंजाबी में? आइए. आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ. अब पंजाबी में. जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं. क्योंकि हर लैंग्वेज का अपना एक मज़ा होता है ना. जिस लैंग्वेज में डायलॉग है उसकी फीलिंग उसी में आएगी. इसीलिए बोला जाता है कि मदर टंग जो है ना, मैं जिस चीज़ में कंफर्टेबल हूँ, जो डायलॉग जैसे मैं बोलूँगा उसमें मैं कंफर्टेबल हूँगा, तभी आपको वो इम्प्रेस होगा, वो इम्प्रेशन दिखाएगा अपना ना. वैसे तो सिंपली है, हिंदी और पंजाबी जो है ना उसमें कोई फ़र्क नहीं ज़्यादा थोड़ा सा, क्योंकि मैं आपको बता देता हूँ कि पंजाबी लैंग्वेज जो है, जो बोली है वो तकरीबन 5,500 साल पुरानी है बोलने के लिए. लेकिन उसको डेवलप जब किया गया तो वो गुरु नानक साहब से शुरू हुई और उसको जो लिपि रूप में लाया गया वो गुरु अंगद साहब, हमारे जो सेकंड मास्टर, सेकंड गुरु थे, उन्होंने देवनागरी जो हिंदी का बेस है, देवनागरी की हेल्प से उसको डेवलप किया गया है. तो उसके अंदर बोलना जली नू अग कहंदे ने, बुझी नू राख कहंदे ने, जिस राख तो बरूद बने उन्होंने विश्वनाथ कहंदे ने. कोई शुरू हाँ जी. और मुल्तानी है. बल्दी नू अग कहने हैं, बल्दी नू अग कहने हैं. जड़ी बुझ गई ओनू स्वाह कहने हैं. राख को हिंदी पंजाबी में स्वाह या मुल्तानी में स्वाह, उन्होंने स्वाह कहने हैं. और स्वाह तो जड़ा बरूद बनता हैगा उन्होंने विश्वनाथ कहने हैं. हाँ जी. गुजराती. सो अलग अलग लैंग्वेज का हम लोग रंग देख रहे हैं आज यहाँ पर. Okay, I'll speak in Gujarati. બળવાને આગ કહે છે, બુજવાને રાખ કહે છે, અને જે રાખમાંથી ફટાકડા બને છે એને વિશ્વનાથ કહે છે. वेरी नाइस, वेरी नाइस. और बंगाली. 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 คุณแหม่มครับเราต้องพูดภาษาไทยนะต้องพูดภาษาไทยนะเรื่องนี้ At first, I would like to thank all of you, especially Honorable Consulate, for arranging such a very beautiful program. So, what is your dialogue? Oh, I don't know. It's very tough to translate. Okay. जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं, उस राख से जो बारूद बने उसे विश्वनाथ कहते हैं. যে জিনিস পুড়তে পারে তাকে আগুন বলা হয়, পুড়ে যাওয়ার পরে যা থাকে তাকে ছাই বলা হয়, আর ছাই থেকে যে বারুদ আসে তাকে বিশ্বনাথ বলা হয়. आप
आप आइए, गुजराती में लेडीज़ के लिए एक स्पेशल डायलॉग है मेरे पास, गुजराती में। हाँ, कच्छी में चाहिए, कच्छी में बोलिए। ये शाहरुख खान की पिक्चर का डायलॉग है। एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू। अच्छा, गुजराती, पहले गुजराती बोलती हूँ। एक चुटकी एक चपटी सिंदूરની કિંમત તમે શું જાણો રાજા બાબુ રમેશ બાબુ। once more. એક ચપટી સિંદૂરની કિંમત તમે શું જાણો રમેશ બાબુ। Same thing in Kutchi. अच्छा, हकड़ी चुटकी जी कीमत अहीं करो जानो, हकड़ी चुटकी जी कीमत अहीं करो जानो रमेश बाबू। Thank you. अच्छा, वो कच्छी में वो बोल देती हूँ, वो वाला भी, विश्वनाथ वाला। विश्वनाथ वाला। जली को आग कहते हैं। आ गया। एक्चुअली बड़े जी भले इनके आग जोवा जे, जे बुझे इनके राख जोवा जे, पण जे राख में थी फटाकड़ो बने इनके विश्वनाथ जोवा जे। पटाखे, हम लोग पटाखे कहते हैं, पटाखे बोले हैं ना। हाँ, बारूद। हाँ जी। असामी कौन है? असामी प्लीज। असामी आइए, आइए प्लीज। Good evening, everyone. It's unfortunate there's one more Assamese guy here, so I cannot say blah blah blah. Yes, I could help you. Yeah. Can you repeat the dialogue? जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं, उस राख से जो बारूद बने उसे विश्वनाथ कहते हैं। Okay, I will try. Chala huak jui koi. Jui is ag in Assamese. Bujha huak sai koi is a bit similar to Bengalis. Like sai is ashes. Awa sai di ji barud bane huak pranjal jyoti soikya nath koi. Good one, good one. And Bhutanese. Yes, please. बिहारी भी हो जाएगा। हाँ जी। बिहारी सब पे भारी, बाद में आएंगे, घबराइए मत। आपको, आप किसी बोलते हैं? हाँ, आपको पहले वो वाला डायलॉग बोलना जो उन्होंने कहा था। नहीं, एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश। Sindur Zumogangi. एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू। Zumogangi. Sindur Zumogangi denda di chigi kachishini Ramesh Babu. And then I'll do the Vishwanath one. Yeah, Vishwanath one. Yeah, Vishwanath very popular. जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं, उस राख से जो बारूद बने उसे विश्वनाथ कहते हैं। Timidelu mela, bamidelu melavi, timidelu tsisiulavi, avi tsisiunale, zomi gilachadelu, Vishwanath lavi. Thank you, thank you. और कौन सी लैंग्वेज है आप लोग? बर्मीज, बर्मीज, yes, yes, madam, please, please come. Russian. Who's anybody speak Russian? Oh yeah, sure. Why not? Burmese, please. Burmese. So it's international mother tongue language day. जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं, उस राख से जो बारूद बने उसे विश्वनाथ कहते हैं। उससे क्या कहते हैं? उसे विश्वनाथ। विश्वनाथ is the name of the person who is telling. विश्वनाथ। विश्वनाथ। Lao ye mi, nian ye pia, pia pian ye तना का विष्णुवाद। Thank you. फारसी में मैंने कहूँगी। Please. असलेहो मिशे विष्णुवाद।
one more dialogue. थोड़ा which some impression. कुछ कुछ होता है राहुल तुम क्या समझे? कुछ कुछ होता है राहुल तुम क्या समझे? ऐसे मैं किस जबान में बोलूँ? आप किसी जबान में बोलिए. फीलिंग थोड़ा फीलिंग के साथ. मैं राहुल हूँ. मेरे राज कपूर तो है नहीं ना यहाँ. अभी कैसे कहूँ? मेरे राज कपूर तो घर में है. मैं तो नरगिस हूँ. राज कपूर तो घर में है. मैं कैसे बोलूँ बताओ. उनको ऐसे बोलिए कि वो आप सामने आ जाए. आपकी फीलिंग आएगी तो वो यहाँ पहुँच जाएंगे. या अजीज़म तो खुजाई अजीज़म मन मुंतज़िरम अजीज़म. थैंक यू. हाँ रशियन अभी बोल रहे थे कोई. 1 minute. ओके. हाँ गढ़वाली प्लीज. आप पहले बोलिए ये. कुछ कुछ होता है राहुल. अब तुम क्या समझोगे? तुम नहीं समझोगे. कुछ कुछ होता है राहुल तुम नहीं समझोगे. अब जो एक चुटकी सिंदूर की कीमत. मैं वो विश्वनाथ को नहीं पहले ये बोलिए. पहले ये बोलिए. वो भूल जाएंगे. यही तो हम चाहते हैं. यही तो हम चाहते हैं. इसी में तो मजा है. एक चुटकी सिंदूर सिंदूरो पिठाई दियो कीमत तुम के जानो रमेश बाबू. थैंक यू. जली को राख कहते हैं बुझी को आग कहते हैं. ओ सॉरी जली को आग कहते हैं बुझी को राख कहते हैं. जो जल दूँ उन्हों आग कहंदे हो. जो बुझियो ओनू राख कहंदियो. जो राख नू बारूद बनियो ओनू विश्वनाथ कहंदियो. गढ़वाली पंजाबी नहीं दी. आप मैमครับภาษาไทยมาเลยครับ. Anything which is burned is called fire. That is put off is called ashes. ต้องขอตัวช่วยแล้วมั้งคะ ครับ चलो दोनों.สิ่งที่ลุกไหม้เรียกว่าไฟเมื่อเผาไหม้เสร็จแล้วเป็นเท่าฐานเมื่อเท่าฐานระเบิดก็เป็นโซซิฟเมื่อระเบิดเข้าฐานก็จะเป็นวิชวลวิศวะเนี่ย สิ่งที่เผาไหม้เรียกว่าไฟเมื่อดับลงเมื่อไฟดับลงกลายเป็นเท่าฐานจากเท่าฐานระเบิด สามารถกลายเป็นระเบิดได้ค่ะ สามารถกลายเป็นระเบิดได้ เรียกว่า ก็เรียกว่าองค์วิศวะนาถ One request. Yes. One Gadwali wants to speak. Gadwali, yes, please come. Thank you so much. Multani, please on the rope. Multani first. बल्दी को भा खेंदे ने बल्दी को भा खेंदे ने जे बचमन ने ते स्वा खेंदे ने उस स्वा तो जेड़ा बंब बनदे को विश्वनाथ खेंदे ने. I'll just express. हमारे चायन ताई की तरफ से स्पेशल गेस्ट. Good evening everybody. Once more, जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं, उस राख से जो बारूद बने उसे विश्वनाथ कहते हैं.
जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं, जिससे बारूद बनता है उसे विश्वनाथ कहते हैं। उस राख से जो बारूद बने उसे विश्वनाथ कहते हैं। जलदा हुआ को आग बोलदा, बुझे हुआ का राख बोलदा, और जय राख बड़ी बारूद बनता तैसे विश्वनाथ बोलदा। और कोई लैंग्वेज कोई है? हाँ, रशियन, यस, वेटिंग फॉर रशियन। हाँ, नेपाली में भी बाकी है। Good evening, everyone. I'm very happy to represent Russian language. Все, что горит, называется огнем. То, что бросаешь, называется пеплом. Из ясеня его называют биссонатом. रशियन में आप एक बार ये एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो? सिंदूर, रमेश बाबू। इंग्लिश, ओके, यू कैन स्पीक इन इंग्लिश। एक चुटकी सिंदूर। एक चुटकी सिंदूर. Yeah, there is no word for sindoor. So this vermilion color, the vermilion color, the sindoor that Indian women, Hindu women put in their hair, you would not know the price of that, Ramesh Babu. Ramesh Babu, you would not know the price of that little pinch of sindoor, pinch of vermilion. Okay. It's basically not jewelry. This sindoor is for the girls who had got married. So she is asking to her husband. You don't know the value of this one pinch of the sindoor. Sindoor, the red color. Normally the Hindus girls puts in on their. You can call her husband. Thank you for here as well. explaining. You can call her husband here as well. So you can input, yeah. You can go. Yes, why not? Why not? Okay. It will be a very short sentence. I can keep your mobile. You can. So you have more feelings for him. Ты не знаешь цену этого украшения. And you? धन्यवाद. Not धन्यवाद. What's your good name? Ellen. कुछ होता है एलन, तुम क्या समझोगे? আমার মনের মধ্যে তো কিছু হয়ে যাচ্ছে, তুমি কিছু বুঝো? Я понимаю. Thank you. And Nepalese? Actually, her dad is Bangladeshi, so she's half Bangladeshi, half Russian. Okay. So, Nice. So it's from our neighboring country, Nepalese. I'm from India. I'm from northeast, from Kalimpong. It's near Darjeeling. Okay, I'll try my best to tell the same dialogue in Nepali. Okay, जली को राख कहते हैं. जलेको कुरालाई आगो भनिन्छ. आगो meaning fire. आगोले जलाएको कुरालाई खरानी भनिन्छ. खरानी meaning ashes. खरानीले बनाएको बारुदलाई विश्वनाथ भनिन्छ. Thank you very much. और कोई लैंग्वेज? एनी? एट लास्ट हमारे कौंसल साहब. नहीं, हिंदी कैसे है? आप मगही में बोलिए. मगही में बोलिए आप. अच्छा, उसमें मगही नहीं, मगही पहले. भोजपुरी तो बाद में आएगी. भोजपुरी तो पहले मगही. नहीं, भोजपुरी में ही सब लोग एंजॉय करेंगे, उसी में बोलने की कोशिश करते हैं. जे जल जाला नु ओकरा आग कहल जाला, आ जे बुझा जाए ओकरा राख कहल जाला, आ जे ऊ में से निकले ला नु ओकरा विश्वनाथ कहल जाला.
थैंक यू वेरी मच। तो ये एक छोटा सा आइटम था आज के लिए। मगही, नहीं ठीक है, हो गया। तो मगही लैंग्वेज ऑफ बिहार और मगही बिहार में बोलते हैं। जो मगध स्टेट जो पुराना था चंद्रगुप्त के समय का, उस इलाके में जो भाषा बोली जाती है उसको मगही कहते हैं। हिंदी से मिलती जुलती सब है। नहीं यूपी नहीं, बिहार में नहीं, मगर यूपी में तो भोजपुरी ही बोली जाती है। ये मगही जो है वो बिल्कुल बिहार की भाषा है। जो मगध राज्य था वो मगध राज्य में बोली जाती है। गया पटना के एरिया में ब्रज भाषा तो उत्तर प्रदेश में बोली जाती है। उत्तर प्रदेश में मथुरा वृंदावन में वो बोली जाती है। और कौन पूछा? मैथिली, हाँ। अवधी यूपी में और नेपाल में बोली जाती है। यूपी का जो हिस्सा, यूपी में और नेपाल का जो हिस्सा यूपी से लगा हुआ है उसमें अवधी बोली जाती है। मैथिली बिहार में और नेपाल में बोली जाती है। जो बिहार का जो नॉर्थ बिहार का जो मिथिला रीजन है और जो उससे सटा हुआ जो नेपाल का इलाका है वहाँ मैथिली बोली जाती है। भोजपुरी भी, हाँ, भोजपुरी भी बिहार में बोली जाती है और नेपाल में भी बोली जाती है। और फिर बिहार से जो लोग गए हुए जहाँ भी है, मॉरिशस में, गुयाना में, वेस्ट इंडीज में, सब जगह आज तक बोली जाती है भोजपुरी। कौन? हाँ तो चलिए, बहुत अच्छा रहा। लेकिन 1 पॉइंट, सॉरी, आप कुछ कह रहे थे? नहीं, आप कह लीजिए पहले, उसके बाद। 1 point could not come. I thought that some friends from Bangladesh would be speaking, so I didn't make a mention of this in my opening remarks. This proposal was in fact taken by Bangladesh to UNESCO to declare February 21 as International Mother Language Day in the memory of those martyrs who what happened on February 21. So firstly UNESCO declared and subsequently UN General Assembly also declared. And I also must mention that we have 22 languages in the Constitution of India, 22 official languages. No language is superior, no language is national language. It is somehow felt that Hindi is the national language, but Hindi is actually the official language, Rajbhasha. Rajbhasha. We have 22 languages. Of each language have been given equal status in the Constitution. And you also mentioned about the education. So that reminds me that the new education policy that we have in India, it encourages education in mother tongues, in other languages besides Hindi and English, and very interestingly, it also encourages children to study a foreign language. So initially we had French, German, but now we have Eastern languages also, including Thai. So now you must be seeing on Facebook so many schools in India are advertising for Thai teachers. So that is one of the reasons. Of course, we have so many Thai children in schools in India. So we had a very wonderful evening. I think food is waiting. We have tried to have something mashed jhol and in typical Bengali style. And of course, Rasagulla, we tried to have Mishti Doi, but we couldn't succeed. So maybe next time. And of course, we hope to see you again and again here. And thanks, Ronnie, again, it was your idea that had made this evening. This is how it should be, between friends. Please come up with all the ideas and we will try to have more and more such celebrations. Thank you all. Let us enjoy food. Yes. Thank you. So, अब खाना लग चुका है, लेकिन एक छोटी सी ट्रेडिशनल सेरेमनी जो भूटान से हमारे साथ है उसको हम करेंगे। लेकिन जो उधर जाना चाहते हैं जाएं, लेकिन अच्छा होगा अगर हम सब लोग मिलके एक छोटा सा हिस्सा उसका बन जाए। तो रिन, आप आएंगे आगे? कुछ नहीं, हम सबको उठकर खड़े होकर एक Basically we joined our hands together and make a circle and then dance. और गाना हम चलाएंगे। तो प्लीज आइए सब लोग, एक दूसरे का हाथ पकड़ लीजिए।
हाथ पकड़ लीजिए जैसे थोड़ा Thank you everyone. खाना लग चुका है. Make sure कुछ ना बचे पीछे. Thank you once again everyone. ये तो पता नहीं थैलियां डाल रखा